लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है व्हेन यू आर क्वेश्चनिंग योर लाइफ चॉइसेस, जब आप अपने खुद के डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहे होते हो या आप थोड़े से कंफ्यूज होते हो, डिसोरिएंटेड होते हो, अचानक से यू गेट अ साइन एंड दैट साइन जस्ट टेल्स यू दैट बेटा यू आर इन द राइट डायरेक्शन। एंड ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। आज की वीडियो में कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है, सो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड स्किप कर लो। आज की वीडियो इज माय यूट्यूब जर्नी। I'm going to tell you how you can get 100,000 subscribers in less than 1 year, because if I could do it 100%, you can also do it. And we're going to talk about some important lessons that I have learned with YouTube, with all of you in this journey. हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। आज की वीडियो स्किन केयर के बारे में नहीं है, आज की वीडियो है क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूं। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा दैट लाइफ में समटाइम्स व्हेन यू आर फीलिंग डिसोरिएंटेड, आपको अपने डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहे होते हो, यू गेट अ साइन। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो अक्टूबर 2023 वाज अ रियली टफ मंथ, वर्क वाइज सुपर टफ। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो रहे थे, टारगेट्स, ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, आई वर्क इन ई कॉमर्स, बेसिकली बैंड बज जाती है इस टाइम पे। सो बेसिकली टफ मंथ एट वर्क, प्लस फैमिली वाइज ऑल्सो अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स। आई वॉज रियली बिजी। साथ ही साथ YouTube, आई पुट आउट डेली कंटेंट, इंस्टाग्राम भी है, एक बेचारा टिकटॉक भी है। इंस्टाग्राम टिकटॉक मिला के टुगेदर लाइक आई हैव 1 million plus followers, right? And 100,000 here. So बहुत कुछ चल रहा था, plus I do consulting, I do memberships, I do a million things in addition to having a full-time job जो मेरी जान है, like I love my job. So जब ये सब हो रहा था, I was, you know, my dad largely was telling me that you're trying to do too much in life and you really need to slow down. And slow down एक ऐसा वर्ड है जिससे ना मुझे बहुत दिक्कत है, because I've always believed that hard work is the key to everything in life. And ये मैंने ना लाइफ में बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था that I may not be the smartest person. पता चल जाता है ना स्कूल वूल में, वैसे I was a good student, but I was good like later, like 9th, 10th, 11th, 12th I was good. उससे पहले I was kind of average. So पता चल जाता है ना कि बॉस एवरेज है, तो जब आप एवरेज होते हो ना, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू डू much more to achieve greater things if you want to achieve greater things. And I was very clear that if I can't be the smartest, if I am not the best at whatever, I'm going to be the most hardworking. And hard work is something that just gives me a lot of happiness. And I think, you know, इसको adrenaline rush भी कहते हैं ऐसे psychological terms में, I don't know. But basically makes me really happy. मुझे काम करना बहुत पसंद है। अगर मेरे पास 24 की जगह 28 घंटे होते तो मैं उसे भी maximize करती, because that is what gives me happiness. It is my source of happiness. हर इंसान का source of happiness अलग होता है। मेरा काम करना है और मुझे बहुत पसंद है। So basically मुझे सब कह रहे थे कि slow down and I was like, this is not happening, what am I doing? I'm not able to manage my time. I was really upset. And then we hit 100,000 subscribers. And अब recently जब मैं travel कर रही थी and I was not well, मैं बीमार भी हो गई, I came home to this. I came home to my YouTube silver button, silver play button, trophy, shield, इसको जो भी कहते हैं. So this is what I got. And ये था मेरा अभी का sign. And I realized that, okay, the moments when I'm feeling super sad, super depressed, it's not that bad, because, you know, God gives you that little extra. Every time I feel कि मुझे लगता है कि ठीक है यार नहीं हो रहा, slow down करते हैं, God himself gives me one little push and I feel कि नहीं, इतना तो हो गया, थोड़ा सा और करते हैं. So today's video, I wanted to basically talk to you guys about my YouTube journey. And I know that a lot of people who also follow me, क्योंकि मैं analytics में देख सकती हूँ, आप लोगों के भी अपने YouTube channels हैं. So you are also budding YouTubers, आप content creator बनना चाहते हैं. तो मुझे लगा कि मेरी जो learning है, उसका पूरा निचोड़ मैं एक वीडियो में डालूं, and I want to share it with you. And ये idea ना मेरे पास बहुत टाइम से था, but initially जब 20,000 सब्सक्राइबर होते हैं ना, तो आप ऐसे ज्ञान नहीं दे सकते हो. That's just really ridiculous. But 100,000 पे थोड़ा सा ज्ञान दे सकते हैं, and that's exactly what I'm going to do. I'm going to talk you through my journey, how I started, what did I plan, what did I not do, and maybe these things, depending on whatever you want to do, whether you're doing cooking or anything else, maybe these tips can help you out. This is my gyan on how do you cross 100,000 subscribers in less than 1 year. And मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ जब मुझे खुद को 1 year and 4-5 months लगे? Why am I saying 1 year? Because guys, मेरा niche बहुत specific है, right? I am doing science-based skincare, generic skincare भी नहीं, बेसन आलू भी नहीं कर रही हूँ. I'm doing a very specific skincare niche को मैं कर रही हूँ, और इसमें 100,000 करना
कितने महीने हो गए, 14, 16 महीने में 100,000 करना इज अ लिटिल टफ. सो अगर आपका नीश थोड़ा सा ब्रॉड है, इफ इट इज एवरीडे टॉपिक्स जो ज्यादा लोग एंजॉय करते हैं, देन 100% you can follow these tips and you can cross 100,000 subscribers in less than 1 year. Okay, so let's get started. Number one, the first and foremost thing, YouTube channel हमें शुरू करना है. We don't know what to do. एंड दैट इज अ बैरियर जो आपको खुद ही क्रॉस करना पड़ेगा. आपकी जो भी एक्सपर्टाइज है, आपका जो भी स्किल है, जो भी हुनर है, फिगर आउट करो. एंड अगर लेट्स से आपने फिगर आउट कर लिया, एंड अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं मेकअप का, बिकॉज आई एम टेकिंग अ जेनेरिक कैटेगरी एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग अ कैटेगरी जो बहुत ब्रॉड है और जिसमें बहुत कॉम्पिटिशन भी है. सो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मेकअप कैटेगरी का. लेट्स से यूर अ मेकअप budding makeup YouTuber, right? And you said कि okay, I know how to do makeup and this is what I want to do. Content बनाना शुरू करते हो. The first tip I want to give you, and this is something I did on my own. Before I started my YouTube channel, I did a research for 3 months. And that's me. I'm a psychopath. मेरे जैसे मत बनो, but at least 2-3 हफ्ते की रिसर्च करो. Basically, in those 3 weeks, it's not like मैंने स्किन केयर YouTube इससे पहले कभी नहीं देखा था. But I saw it as a consumer. And I saw it कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, like that. I didn't see it from a जजमेंटल कह लो और एन एनालिटिकल व्यू कि ये क्यों चल रहा है, उसने आज ये वीडियो क्यों डाली. बेसिकली 3 महीने में जितना यूट्यूब पे स्किन केयर है उसे मैं घोल के पी गई थी. आई वॉज स्पेंडिंग आवर्स ऑन यूट्यूब टू फिगर आउट कि गैप कहाँ है, मैं क्या कर सकती हूँ अलग. एंड मुझे मिल गया कि मैं क्या कर सकती हूँ अलग. मैंने देखा कि सब लोग प्रोडक्ट कह रहे हैं, लगाना कोई नहीं सिखा रहा, डॉक्टर्स भी इसके बारे में नहीं बात कर रहे, चलो let's get started with that. So मैंने अपना niche के अंदर super niche identify किया that I give you detailed skincare routines. Now coming back to makeup. Makeup बहुत लोग सिखाते हैं. आप उसके अंदर niche में जा सकते हो. Do you want to talk about only party makeup? And that means कि आपकी ज्यादातर videos उसके बारे में होंगे and a few can be basic. Do you want to talk about makeup education? Do you want to talk makeup for mature skin? YouTube पे and in general on social media, the more niche you go, numbers फटाफट नहीं बढ़ेंगे, पर जब बढ़ेंगे ना, बिकॉज एल्गोरिथम रीड करता है. ये तो नहीं हो सकता कि दुनिया में सिर्फ 10 ही लोग हैं जो एक टॉपिक में इंटरेस्टेड है. नहीं ना, देयर आर 7 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड. सो यू आर बेसिकली गोइंग टू आइडेंटिफाई योर नीश. इनिशियली आपकी ग्रोथ स्लो होगी, बट यू विल देन फाइंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एंड टू फिगर आउट कि उस नीश में आप बनाओगे क्या, कम्स माई पॉइंट नंबर 2. राइट डाउन योर कॉन्टेंट आइडियाज. जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू भी नहीं किया था, वो 3 महीने की रिसर्च फेज में मैंने कुछ 48 टॉपिक्स बनाए थे. मेरे पास एक धोबी लिस्ट थी एक्सेल शीट में, जिसमें मैंने बहुत सारे स्किन केयर टॉपिक्स रखे थे. फिर मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में रूटीन्स को स्क्रिप्ट आउट करती थी. अगर आप मेरी जर्नी शुरू से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा कि जब मैंने बोलना शुरू किया था, मैं ऑब्वियसली ब्रेक ज्यादा लेती थी, बिकॉज मैं प्रिंट आउट नीचे रखती थी एंड आई वुड बी रीडिंग आउट ऑफ इट जस्ट टू गेट कंफर्टेबल. तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ. बट दैट वाज माय जर्नी. सो राइट इट डाउन, स्क्रिप्ट इट आउट. I, in general, have been a person who's been very comfortable with public speaking. स्कूल में, कॉलेज में मुझे ऐसे कोई डर वर नहीं लगता. I have no stage fright. मैं कहीं पे भी खड़े होके कुछ भी बोल सकती हूँ. That's me. Some of you may have that fear. So scripting will be your best friend. जो भी आपकी लैंग्वेज है, जिसमें आप चैनल बना रहे हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, स्क्रिप्ट करो. सो बेसिकली रिसर्च विच इज pre-phase, before you start your YouTube channel, research your niche and gaps find out करो. गैप फाइंड आउट करने के बारे में अपने पहले, मैंने तो 48 आइडियाज लिखे थे, आप 20 भी लिख सकते हो. 20 आइडियाज लिखो कि बनाएंगे क्या, और उसके बाद उसे स्क्रिप्ट आउट करो. स्क्रिप्टिंग इज क्रिटिकल. इवन इफ यू आर कॉन्फिडेंट, यू शुड स्क्रिप्ट इट आउट. इस पॉइंट पे गाइस हम रिसर्च पे ही हैं. हमने शूटिंग के बारे में, लाइटिंग के बारे में कुछ बात नहीं करी है. एंड ये रिसर्च बहुत क्रिटिकल है. लेट मी टेल यू व्हाई. ये मैं स्टोरी सुना चुकी हूं. अगर आप पहले सुन चुके हो तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना. बट बेसिकली इन 2010 आई एक्चुअली स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम. और तब मैंने शुरुआत करी थी मेकअप के साथ, बिकॉज आई ऑल्सो लव मेकअप. आई हैव अ बिग लव फॉर मेकअप. ओके, एंड दैट यूट्यूब चैनल और माई कॉन्टेंट पोस्टिंग लास्टेड फॉर, sorry, it was not 2010, it was 2011 and it lasted for literally a year. And एक साल में मैंने कुछ randomly 15-20 वीडियोस डाले, और उसके बाद हर एक साल, मतलब 2012 में 2 वीडियोस, ऐसे करके. Basically I was not regular with it. Why?
बिकॉज आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल ऐसे ही, सब लोग कर रहे थे, मैंने भी कर लिया. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक, ओ आई नो हाउ टू डू मेकअप, आई लाइक मेकअप, लेट मी स्टार्ट अ चैनल. इट वॉज रैंडम. नंबर 2, मैंने टॉपिक्स के बारे में कभी रिसर्च नहीं करी. नंबर 3, मेरा कोई कंटेंट प्लान नहीं था. नंबर 3, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं वैल्यू कैसे ऐड करूंगी. और नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि मुझे मेकअप करना पसंद है. सिखा विखा नहीं सकती मैं, बिकॉज नॉट दैट माई स्किल्स आर दैट ग्रेट. नंबर 2, आई डोंट एंजॉय द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑन मेकअप, शूटिंग, देन वॉशिंग इट ऑफ. क्या फायदा हुआ? सो बिकॉज ऑफ दैट आई डिडंट रियली एंजॉय इट, एंड देयरफॉर आई वाज नॉट रेगुलर विद इट. देयरफॉर जब आप रिसर्च करते हो, लिखते हो, यू फिगर इट आउट बिफोर यू गेट स्टार्टेड. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च. नंबर 2, when you get started with your channel, please make sure कि आप छोटी सी चीजों पे ध्यान दें. जैसे कि आपका चैनल का जो बैनर है, जो YouTube पे नजर आता है, whatever be your channel name. Now my channel name, actually I always refer to it as Skincare Simplified, which is sort of my channel, but my channel name, actual naam is Nipun Kapoor, because everywhere I'm Nipun Kapoor. मेरे ऐसी कोई I don't have any pseudonyms anywhere. So because of that, I've just used my name everywhere. So आपका जो भी नाम है, figure it out, have a nice channel art, and then figure out how you're going to shoot. I decided that I had a nice iPhone. Okay. So I was like, iPhone's the best. I'm going to use my iPhone. I can edit it. I can do whatever on my phone. But editing is a big, big thing. So जब मैंने अपना चैनल शुरू किया, उससे पहले मैंने Upwork, which is like a freelancer website, उस पे जाके मैंने एडिटर्स ढूंढने शुरू किए, because I was like कि अगर मैं शूटिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग सारा प्रेशर खुद पे डालूंगी, I will not be able to last. So I actually found 2 editors and I started working with them, and मैंने अपना अपलोड स्केड्यूल शुरुआत में रखा था हफ्ते में 2 बार, and I stuck to it like how? Matlab, I think only when the time was getting married or something in the middle, I may have missed 1 or 2, but I have always stuck to my schedule. I have never really missed it, and having editors really helped. If you don't want to invest in editors, then I highly recommend कि आप editing सीखो. बहुत सारे free softwares हैं, Filmora है, you've got CapCut, you've got so many free softwares. Go ahead, figure it out, and you can just about learn it. But मैंने initially editors use करे थे, and जब वो मेरा channel शुरू हो गया, editors videos edit करके मेरे को भेजते थे, I was actually simultaneously learning how to edit, because I knew कि I don't want to lifelong invest in editors, because obviously I was not earning any money from YouTube, so it was all my salary and my savings that I was putting in. So I was learning how to edit simultaneously, but मैंने शुरुआत में अपने आप को एक support system दिया, and that is very important, and you need to figure that out. Number 3, thumbnails. I cannot tell you, and I know there are a lot of people on YouTube who say all kinds of things कि अब जो पहले 5 सेकंड का प्री रोल होता है वो मैटर करता है, थंबनेल नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, सब मैटर करता है. ठीक है, everything is important. Your thumbnail is important, your intro is important, what you do, your lighting, everything is important. Now how do I shoot? I shoot with my camera, I shoot with my phone and I shoot with my ring light, and sometimes जब writing ठीक नहीं होती, I use like 2 large ring lights. I have like really huge ones, so मैं वो use करती हूँ. ठीक है, जो भी आपका setup है, whatever you're comfortable with, figure it out, get started, and that is what I did. Basically, मैंने अपने ऊपर ज़्यादा pressure नहीं डाला. All my focus was on my content, and everything else I was like, editor कोई और कर ले. Thumbnails Canva पे बनाना बहुत आसान है. Obviously, I use Canva. You would have figured it out. But Canva का एक paid version आता है, एक free version आता है. दोनों ही अच्छे हैं. Free version, paid version में थोड़े ज़्यादा options मिलते हैं. So I recommend using Canva, and that's what I did. And yeah, उससे बहुत आसानी से बन जाते हैं thumbnails. So that's what I did. So thumbnail is important, intro is important. You would have seen so many YouTube channels, so many videos, people say, hi guys, how are you? Today's video is this. Nobody has the time for it. If you've seen my initial videos, which would be actually the first 3 months, when I'm saying May, June, July, maybe August last year, 4 months, वहां मैं कुछ बोलती थी, and then एक intro आता था, जिन ऐसे ना मैं स्किन केयर लगा रही हूँ, ऐसे कुछ intro सा आता था, and then the video would start. Scrapped it out. I said intro, outro का जमाना गया. That's very 2010. Now you need to get straight to the point, because honestly no one has the time. So basically अपने scripting में, अपने पूरे स्क्रिप्ट में make sure that you have those key moments जहां आप audience को engage कर पा रहे हो. So that's number 3. So you have to make sure your thumbnail is good, your intro is good. Obviously everything is content. Work the hardest on your content. कभी-कभी light ज़्यादा अच्छी नहीं हो,
ऑडियो ज्यादा अच्छा नहीं हो, people will forgive you for some things like that. But if your content is not good, nobody's going to stick around. So work the hardest on your content and then everything else will follow. So Canva बता दिया, editors बता दिया, research बता दिया. Number 4. So number 4, number 5. Actually, guys, this is like number 6, 7. I don't know. I'm not keeping count. Maybe edit में मैं add कर लूंगी. But the other thing which is very, very important, जब आप अपने सोशल मीडिया पे, सो ऑब्वियसली मेरे पास एक छोटा सा एडवांटेज था. मैंने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया जर्नी की शुरुआत करी थी टिकटॉक से. एंड ऑब्वियसली टिकटॉक्स नॉट इन इंडिया एनीमोर, वो बंद है. मैंने टिकटॉक शुरू किया था सम टाइम इन 2021. सो जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, टिकटॉक पे ऑलरेडी मेरे कुछ 2 लाख फॉलोअर्स थे. इंस्टाग्राम पे कुछ 20,000 थे जो गलती से आ गए थे टिकटॉक से इंस्टाग्राम वाज स्टिल समवेयर, आई हैड दैट ऑप्शन. एंड मैंने अपने वीडियोस को हेविली प्रमोट करना शुरू किया टिकटॉक पे. नाउ दिस इज वेयर अ ह्यूज लर्निंग कम्स. जब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर आप टिकटॉक की बात करो, इंस्टाग्राम की बात करो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वांट के जो यूजर है वो उसी प्लेटफॉर्म पे रहे. जब आप उस प्लेटफॉर्म पे दूसरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हो, जैसे मैंने वीडियो बनाई इधर, हे गाइस आई हैव क्रिएटेड द बेस्ट एंटी एजिंग रूटीन ब्ला ब्ला ब्ला, लिंक इन बायो, गो चेक इट आउट. अब दुनिया जाएगी, बायो पे क्लिक करेगी, टिकटॉक से बाहर जाएगी, टिकटॉक हिट्स इट. सो टिकटॉक पे मेरे व्यूज लाइक क्रैश कर गए. जितना मैं अपने यूट्यूब को प्रमोट करती थी, टिकटॉक वाज लाइक पनिशिंग मी कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग. सिमिलरली मैं ये इंस्टाग्राम पे भी करती थी. थोड़ी बार तो इंस्टाग्राम ने मेरी गलती पकड़ी नहीं, बट जब पकड़ी तो ओ माय गॉड, माय व्यूज वर क्रैशिंग. सो लर्निंग नंबर 1, yes, cross promote करो. Everybody talks, every big YouTuber, every YouTube guru सब बोलते हैं कि यहाँ वहाँ cross promote करो. करो अगर करना है. But in my experience, and because I'm already an established content creator on TikTok and on Instagram, so I'm not a one platform miracle. जैसे होता है ना one movie miracle, नहीं क्या कहते हैं उसको, one star, ऐसे कोई मैंने ऐसे, there is a particular saying, it'll come to me, one movie wonder, one film wonder, right? ऐसा कुछ terms हैं. I'm not that. I'm not a one platform person. I have excelled on 3 platforms. So when I talk of social media, I talk with complete authority. Otherwise, if you see a lot of YouTubers, उनके millions हैं YouTube पे, Instagram पे बहुत कम है, या TikTok पे है ही नहीं, right? I am across platform. I'm platform agnostic. And उस पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि how do you stay true to every platform, because every platform is different. Point I'm trying to make is, प्रमोट करना चाहते हो क्रॉस प्रमोट करो, बट उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा. आपको अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है उस प्लेटफॉर्म पे जो है यूट्यूब इन दिस केस, टू ग्रो योर ऑडियंस, बिकॉज आपको इसी कम्युनिटी से, इसी प्लेटफॉर्म से अपने ऑडियंस को हार्नेस करना है. एंड दैट इज समथिंग यू शुड रिमेंबर. एंड अगर आप अपने वीडियोस को क्रॉस प्रमोट करना चाहते हो दूसरे चैनल्स पे, देन यूज डीप लिंक्स. इसके बारे में कोई बात नहीं करता. अगर आपने सीधा वीडियो का लिंक शॉर्टन भी करके, बिटला यूज करके शॉर्टन करके भी स्टोरी पे डाला या लिंक इन बायो में डाला, जब लोग उस लिंक को क्लिक करेंगे, उनको अगर आपकी वीडियो पसंद भी आ गई एंड दे वांट टू लाइक, they will have to sign into YouTube. अगर उनको सब्सक्राइब करना है, they will sign into YouTube. And basically they will like, यार कौन साइन इन करे, वो निकल जाएंगे. They will not end up subscribing to you. But अगर आप deep links यूज करते हैं, it's a उसमें 500 लिंक्स क्लिक्स फ्री होते हैं. इट्स बेसिकली अ सर्विस. इट इज कॉल्ड ऐप URL Genius. इट इज अ पेड, it's a paid thing, right? So it's not free. मतलब 500 क्लिक्स तक फ्री होते हैं, but उसके बाद they start charging you. बेसिकली जब आप उसमें अपना लिंक एम्बेड करके एक नया लिंक बनाते हैं एंड अ यूजर क्लिक्स ऑन इट, वो डायरेक्टली उनका YouTube ऐप खुलता है या उनका YouTube मोबाइल वर्जन खुलता है जहां वो ऑलरेडी साइंड इन होते हैं. एंड दैट वे दे कैन लाइक योर वीडियो, दे कैन सब्सक्राइब टू योर चैनल. उनको एक एडिशनल स्टेप नहीं करना पड़ रहा टू एक्चुअली गो अहेड एंड सब्सक्राइब. तो उनको एक एडिशनल स्टेप नहीं करना पड़ रहा टू गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू यू. एंड दैट इज अ बिग थिंग अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्रॉस प्रमोट करके यूजर्स को लाने की कोशिश कर रहे हो. अदरवाइज फायदा क्या हुआ, आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डाला, उन प्लेटफॉर्म्स को भी आप पे गुस्सा आ गया, दे आर रिड्यूसिंग योर व्यूज, आपको शैडो बैन कर रहे हैं, और आपके जो बेचारे से आए 3-4 लोग वो भी आपको सब्सक्राइब नहीं कर पाए बिकॉज दे वर टू लेजी टू साइन इन. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो देखेंगे, फिर क्लिक करेंगे, फिर साइन इन करने का इफेक्ट करेंगे. नहीं करते लोग. सो अगर आपको क्विकली नंबर्स ग्रो करने हैं, यूज दिस. इट्स अ पेड सर्विस बट यूज इट. तो मैंने बता दिया आपको ऐप URL एंड आई विल पुट इट इन द
description, so you can check it out. That really helped me. But like I said, मैं promote करती रही. In fact, बहुत time तक, till about 2 months ago, मैं Instagram stories पे डालती थी अपनी video with the app URL link. And then I realized that Instagram भी बहुत गुस्सा हो गया है. It's really, really pushing down my views, and I was like, forget it. I'll just do this on YouTube. I'm not going to promote it. And so वो थोड़ा बहुत decision आपको लेना पड़ेगा. I also understand that everyone will not have the advantage of having multiple platforms. So even if the point I'm trying to make is that अगर आप सिर्फ YouTube में ही अपने आप को grow करना चाहते हो, बहुत scope है boss. मतलब today if you do skincare, right from Asian content creators, American, Indian, DIY, not DIY, इतना सारा competition है. मैंने भी तो कर ही लिया, right? तो आप भी कर सकते हो, whatever be your niche, just be strategic about it. And that is not just about YouTube. Today's world is highly competitive. Whether you're a student or you're working or whatever you're doing, बहुत competition है. So you have to treat it like a game of chess. You've got to be strategic. ऐसे blind नहीं खेल सकते. 3 पत्ती नहीं है कि कुछ भी कर लिया ठीक हो जाएगा. ऐसे नहीं होता. So be strategic. So deep links, really recommended. Eye-catching thumbnails, highly recommended. इंट्रो आउट्रो पे बहुत फोकस करो. डोंट वेस्ट योर टाइम सेइंग हेलो हाय वीडियो के बीच में बोल दो तो कोई गुस्सा नहीं होगा, राइट? सो डोंट डू ऑल ऑफ दोस फनी थिंग्स एंड रिसर्च फाइंड योर स्पेशलिटी. एंड अगर इस पॉइंट पे किसी ने कमेंट सेक्शन में लिख दिया ना कि मेरे में कोई स्पेशल नहीं है, तो यार आई एम इन दुबई, मुझसे आके मिल लो एक बार, बिकॉज आई हैव दिस अमेजिंग क्वालिटी जो एक्चुअली एक डिसएडवांटेज भी है, सो माई HR people or any HR person or any recruitment person who has to ever work with me, कि अगर लोग हायर करने होते हैं, they hate me. They're like, इसको तो हर कोई पसंद आ जाता है, इसमें ये क्वालिटी है, इसको हायर कर लो, इसमें वो क्वालिटी है, उसको हायर कर लो. She'll be like, what is wrong with you? HR people hate me. They're like, you are an HR nightmare. Because जब आप किसी को हायर कर रहे होते हो, आपको बहुत क्रिटिकल होना पड़ता है, राइट? यू कांट बी लाइक कि इसमें ये एक चीज बहुत अच्छी है, इसको हम ग्रूम कर सकते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ यू थिंक देयर इज नथिंग स्पेशल इन यू, find your, I wish I could meet you, because I will be able to tell you 10 things which are super special in you and they are super unique to you. अपना exclusive brand build करो. That is very important. And I'll tell you the most important lesson जो मुझे अभी अभी realize हुआ है 3 हफ्ते पहले. आप सबने देखा होगा, right? Instagram पे Jasmine Kaur, the lady from Design Machine Live, who's been going viral, and like right from Ranveer Singh to everybody is like using her dialogues, etc. That's so beautiful, so elegant वाला. उससे एक बहुत important lesson मिलता है life में, and that is that authenticity goes a long way, not just on social media but in life. I feel that lady, when she said this so beautiful, so elegant, या जिस तरह से वो कोई भी चीज डिस्क्राइब करती है, उन्होंने ये थोड़ी सोचा होगा कि वायरल हो जाएगा. एंड इफ यू सी all of her videos, उनका एक ये typical तरीका है बात करने का. That is her authentic self. And yes, someone caught on to it. It became a huge trend. She's blowing up on Instagram, and honestly, she's so much fun. मतलब अब उनकी वजह से ना मैं अपने वार्डरोब को अलग तरीके से देखती हूँ. मैं देखती हूँ कि हाय, मेरे पास लड्डू पीला नहीं है. आई डोंट हैव लड्डू पीला, और आई डोंट हैव माउस कलर. आई ऑलवेज न्यू दैट देयर इज दैट टोप काइंड ऑफ शेड जिसे लोग माउस बोलते हैं, बट अब मैं नए रंग देख रही हूँ, thanks to Jasmine Kaur. So basically the point is authenticity goes a long way. Then language selection, very important, and I have to talk to you guys about this. When I started my channel, I started making content in English, not because मुझे इंग्लिश से कोई खास प्यार है. मैं हर जुबान अच्छे से बोल लेती हूँ. पंजाबी बात कर लेती हूँ. पंजाबी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट काफी ठीक है. इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, थोड़ी बहुत गुजराती, a few words in Marathi. Like I'm very good with words. थोड़ी बहुत अरबी भी बोल लेती हूँ. I'm good with languages. English से मैंने इसलिए शुरुआत करी because I'm comfortable. अगर मुझे extempore 15 मिनट बोलना होता है, I'm just more comfortable. But YouTube analytics, किसी भी social media platform के analytics उठा लो, Facebook, Instagram, TikTok, whatever. TikTok के तो बहुत ही खराब है. YouTube has like the best analytics. As I started, एक तो मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि उर्दू में बनाओ, सो दैट इज फाइन, दैट्स वन. नंबर 2, जब मैं एनालिटिक्स देख रही थी, मैं देख रही थी कि यार मेरे सब्सक्राइबर्स जो वीडियोस देख रहे हैं वो तो एक्चुअली हिंदी में है. सो ऑब्वियसली इफ दे आर वाचिंग कंटेंट इन हिंदी, इफ दे आर वाचिंग कंटेंट इन उर्दू, दैट मीन्स उनको वो लैंग्वेज बेटर लगती है और दे प्रेफर इट. तो मैं इंग्लिश क्यों बोले जा रही हूँ, मुझे कौन सा अवार्ड मिल रहा है? सो आई मेड द स्विच. Initially, switch करते time, I made it bilingual.
आधी इंग्लिश आधी हिंदी, फिर कभी कभी ज्यादा हिंदी. एंड इनफैक्ट टुडे ऑल्सो इफ यू सी माई स्टाइल, इट इज बेसिकली दैट. इट्स हिंदी इंग्लिश मिक्स, इट्स English with a little bit of Urdu. Basically, it's a very common way of how people talk. प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, प्योर उर्दू आजकल कोई नहीं बोलता है. हमारी सबकी जबानें ना थोड़ी सी मिक्स हो गई हैं. तो मेरा चैनल भी मिक्स हो गया. एंड विच इज वाई लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से दैट प्लीज मेक कंटेंट इन इंग्लिश. मैं फिगर आउट कर रही हूँ गाइस, गिव मी सम टाइम इफ आई कैन फाइंड समवन टू डू लाइक सबटाइटल्स फॉर एवरीथिंग इन इंग्लिश एंड इट विल बी डन. बट राइट नाउ analytics, I see where my audience, what my audience is watching, where they're coming from, what they are comfortable, and if they continue loving me speaking Hindi, मैं हिंदी में ही बात करूंगी ना, मैं क्यों इंग्लिश में बात करूं, राइट? वैसे भी अपनी भाषा बोलनी चाहिए. सो एनालिटिक्स पे बहुत ध्यान दें. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट. एनालिटिक्स आपको इनिशियली एक महीना तो नहीं, बट 2-3 महीने के बाद ही आपको ठीक से आपका एनालिटिक्स दिखना शुरू करता है, right? And that is something that you have to constantly be at. Audience research के ऑडियंस क्या देख रही है, ऑडियंस किन कीवर्ड्स को सर्च कर रही है. अपने वीडियो के एनालिटिक्स देखें, 2 दिन में आ जाते हैं विद इन 48 आवर्स. स्पाइक्स एंड ड्रॉप्स के कहाँ पे आपका ऑडियंस आपको बाय बोल रहा है, ड्रॉप कर गया या पीपल ड्रॉप्ड आउट, कहाँ पे ऑडियंस स्पाइक कर रहा है. वॉच ऑल ऑफ इट एंड टेक इट एज फीडबैक. इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहती कि इजी है, इजी कुछ भी नहीं होता, हर चीज में मेहनत करनी पड़ती है. सी टिकटॉक इज बेस्ड ऑन वायरलिटी. टिकटॉक का एल्गोरिथम कहता है कि अगर आप का जो कंटेंट है, हम आपके फॉलोअर्स को तो दिखाएंगे ही नहीं, वी विल पुट इट ऑन व्हाट इज कॉल्ड द फॉर यू पेज, जिससे आपको ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे. वेदर दोस फॉलोअर्स कीप कमिंग बैक फॉर योर कंटेंट इज रियली अप टू देम, बिकॉज द टिकटॉक एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन वायरलिटी. Instagram is based on community. YouTube is very different. It is a mix of community and retention. And ये mix इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, आपने मेरी 5 वीडियोस देखी और आपने सब्सक्राइब नहीं किया. ऐसा नहीं है कि आपको मेरी वीडियोस नहीं दिखेंगी, YouTube दिखाता जाएगा वीडियोस, बिना सब्सक्राइब किए भी आप देखते जाओगे. सो दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? वो व्यूअर को सब्सक्राइबर में कन्वर्ट करने का जो एफर्ट होता है, जो स्किल होता है, दैट्स वेरी वेरी डिफरेंट. एंड इसलिए यू हैव टू फोकस ऑन एनालिटिक्स. आई नो सो मेनी पीपल, फेलो क्रिएटर्स, जो मैं थोड़े बहुत जो इनको जानती हूँ, वो बताते हैं देखते ही नहीं है. क्यों नहीं देख रहे हो यार? मतलब यूट्यूब ने दिया है ना, तो कुछ सोच के दिया होगा, राइट? सो pay attention to your analytics, watch your analytics carefully, and that's my tip number whatever 7-8. और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है. ओ सॉरी, very important, SEO. Everything is SEO. The content in your description, your content, your tags, very very important. और यहाँ मैं बताना चाहती हूँ about another tool जिस पे मैंने इन्वेस्ट किया, शुरुआत में नहीं, अभी, मतलब अभी कुछ 4-5 months पहले, आई थिंक मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए थे, मैंने इन्वेस्ट किया था TubeBuddy में. नाउ TubeBuddy इज एन अमेजिंग टूल. इट इज अ पेड टूल. उसमें फ्री वर्जन आई डोंट थिंक आता है, सो आई वेटेड फॉर अ वाइल टू इन्वेस्ट इन इट. बेसिकली दैट हैज अ लॉट ऑफ फीचर्स. वो आपको कीवर्ड्स एनालाइज करने में हेल्प करता है कि कीवर्ड्स के कितने सर्च वॉल्यूम्स हैं. सो ऑब्वियसली अगर आप पॉपुलर टॉपिक्स पे बना रहे हो और साथ ही साथ सही कीवर्ड्स डाल रहे हो, आपके व्यूज इंक्रीज होंगे. टाइटल जनरेशन में हेल्प करता है, 2 थंबनेल्स को कंपेयर करके A/B टेस्टिंग में हेल्प करता है. देयर आर 20,000 थिंग्स यू कैन डू विद इट. मैं तो बहुत बेसिक यूज करती हूँ, बट बेसिकली आई इन्वेस्टेड इन TubeBuddy. एंड दिस इज समथिंग आई वांट टू टेल यू दैट माय यूट्यूब जर्नी, I'm coming to the money part also, but my initial 8-9 months were all about investing in it. So YouTube is for the long run. It is the lambi race ka ghoda, sort of, right? You have to keep investing in it. Investment can be your time, investment can be resources. जैसे मैंने editors initially use किए, बाद में editing सीख के मैं खुद करने लग गई editing, या जैसे मैंने फिर SEO specialist, SEO कुछ courses करके मैंने SEO करना शुरू किया, फिर मैंने कुछ SEO specialist की help भी ली, and I continue to take help from SEO specialists as well. I do some optimization, I tell some other people to do it. So basically there are lots and lots of things that I do and I invest in my channel, because before you start making money, and here I'm going to talk to you guys about money, like सबको लगता है कि पता नहीं यूट्यूबर्स कितना कमाते होंगे, and obviously I have a regular job, right, to compare it to, and I'm at a fairly senior level. I've had the privilege to have a career that a lot of men don't have, forget other people. So because of this privilege, when I compare YouTube money, it's
इट्स रियली नथिंग. एंड लाइक शुरुआत में आपका जब मोनेटाइजेशन हो जाती है, आपको पैसे आने शुरू होते हैं, you'll get like $100, $150, $200, and वो उसी रेंज में चलता रहता है for a really really long time. Even today, the earning from YouTube does not support my lifestyle. मतलब मेरे स्किन केयर का खर्चा भी नहीं निकलेगा, to be very fair. Okay, forget my lifestyle, and I like nice things, and I spend a lot of money on things that are not necessary. So YouTube doesn't support my lifestyle, and that's all right. And that is something that you need to understand, that before YouTube gives you something, it takes a lot out of you in terms of your time, your investments, your money, your resources, and आपको committed रहना पड़ता है. Obviously, guys, when you hit like 500,000, 1 million, and your views and your RPMs are at a different level, then maybe, yeah, it is a really good income. Obviously, बहुत जल्दी, like you, even at 50,000, 20,000, 100,000, you can do sponsorships. अब मैं sponsorships नहीं करती हूँ, that is my call, right? Because I don't want to do sponsorships on YouTube. Or rather, if I do sponsorships, they have to be really worth it. Like मेरे बहुत सारे parameters हैं, because I'm trying to build a unbiased community, and which is why I don't do sponsorships. Obviously, if you are a YouTuber जिसके 100,000 subscribers हैं, and आप sponsorships करते हो, sponsorships will pay you way more than YouTube will ever pay you, right? And उस पे बहुत सारा like डेटा अवेलेबल है. सो दैट्स योर कॉल, राइट? एंड आई एम नॉट सेइंग स्पॉन्सरशिप्स आर बैड, एंड जो करते हैं वो गलत करते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, ऐसी मेरी बिल्कुल मंशा नहीं है. मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, ठीक है? सो माई सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम यूट्यूब इज द यूट्यूब एडसेंस. आई डोंट डू स्पॉन्सरशिप्स. बट अगर आपके 100,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो 100% आप स्पॉन्सरशिप्स कर सकते हो, आप अफिलिएट्स मार्केटिंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, इन विच यू कैन अर्न मनी, विच इज लाइक एन अमेजिंग थिंग. सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर, दैट SEO is also really important. A tool like TubeBuddy, जैसे कि मैंने कहा, मैंने 50,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास उस टाइम पे इन्वेस्ट किया. आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, नहीं करना मत करो, बट दीज आर थिंग्स अवेलेबल टू यू. एंड ये मैंने रियलाइज किया है कि जितना इट्स लाइक मेकिंग अ डिजर्ट, जितना ऑप्टिमली आप उसमें अगर आप हलवा बना रहे हैं, जितना ऑप्टिमली उसमें आप घी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, वो उतना अच्छा बनता है. एंड दैट्स व्हाट यूट्यूब इज. जितना आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे अपने आप को, उतने ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द थिंग्स दैट यू शुड नेवर डू. प्लीज डोंट डू दीज थिंग्स इफ यू आर स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये चीजें होती हैं. And I'll tell you how. So जब मैंने अपना YouTube चैनल नया शुरू किया था, एंड मैं TikTok पे और Instagram पे प्रमोट करती थी, मुझे बहुत सारे DMs आते थे. We will help you reach 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, जो चाहिए होते हैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए. If you pay us $500, $200, 1,000, मतलब अलग अलग रेट कार्ड्स, अलग अलग एजेंसीज के आते थे. एंड मैं कहती थी, यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कैसे कर देंगे, राइट? इट्स वेरी टेम्पटिंग, राइट? बिकॉज हर किसी को वो 4,000 घंटे का थ्रेशोल्ड क्रॉस करना होता है. सो अब ऐसे तो मैं करूंगी नहीं कुछ. सो मैंने उस पर भी रिसर्च करी. मैंने बेसिकली रिसर्च करी टू फाइंड आउट दैट हाउ डू यू डू दिस, राइट? और मैंने ये सर्च भी यूट्यूब में ही किया. गेट 4,000 वॉच आवर्स, 1,000 सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब पे सर्च किया तो बहुत सारी वीडियोस आई. एंड यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी एक पर्टिकुलर चैनल को, विच इज महात्मा जी टेक्निकल. So Mahatma Ji Technical is one channel, and then they have another channel called We Make Creators. So मैंने We Make Creators को follow किया. मैं को बहुत टाइम से follow कर रही थी, ठीक है? एंड ये जो सर हैं, जो मेन सर हैं उनको मैं follow करती थी. एंड एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जितना रिसर्च मैंने स्किन केयर के लिए किया था, Mahatma Ji Technical, We Make Creator, every video he posted I saw, and I got hooked on to his channel because of this research. क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया, उनकी एक वीडियो थी कि ये जो स्कैम वाले लोग होते हैं, ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं. उन्होंने समझाया कि लोग 10 टीवी स्क्रीन, 10 मोबाइल ऑन करके आपकी वीडियोस लूप पे चलाते रहते हैं, एंड अलग अलग जगह फोरम्स में जाके पोस्ट करेंगे कि सब्सक्राइब करो, एंड धीरे धीरे आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं. बट बेसिकली वो एक डेड पूल होता है. दैट इज नॉट अ ऑडियंस दैट हैज ट्रूली सब्सक्राइब टू यू बिकॉज उन्हें आपका कॉन्टेंट पसंद आया. ये ऐसे ही भूले भटके कुछ लोगों ने गलती से एक बटन दबा दिया एंड आपको वो लोग मिल गए, राइट? सो वो मैंने जब देखा, आई वाज लाइक, ओ माय गॉड. एंड अगर आप अपने जर्नी में हो, ये स्टूपिड चीजें मत करना. मैंने नहीं करी, बिकॉज आई लैंडेड अप ऑन दिस Mahatma Ji Technical, We Make Creators, and I have to give a huge shout out to them. उनका एक कोर्स भी है, ओके? मैं कोर्स का नाम भूल गई हूँ. YouTube मास्टरी कोर्स है उनका.
महीने का और समथिंग, बट लाइफ टाइम कॉन्टेंट इज अवेलेबल। ओके, मैंने वो कोर्स भी लिया। वो दिस इज माई बैड कि मैंने 100% उसको ठीक से नहीं किया, इवन दो आई पेड फॉर इट। बट लेट्स से कि मैंने उस कोर्स को ध्यान ध्यान से 60-70% तक तो कंप्लीट किया। एंड महात्मा जी टेक्निकल सर, इफ यू एवर वॉच दिस, आई एम सो सॉरी, कंटेंट आपका अमेजिंग है, बट इट वाज माय बैड, मैं नहीं पूरा कर पाई। बट बेसिकली मैंने वो किया, तो उधर से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, राइट? बिकॉज सी अंडरस्टैंड, दिस इज लाइक अगर आप स्कूल जाते हो, राइट, यूर इन फर्स्ट स्टैंडर्ड और देन यू गो समवेयर एल्स और इन कॉलेज, यू आर स्टार्टिंग न्यू, राइट? तो आपको सीखना पड़ेगा। एंड ये सीखना, that the fact that you have to learn, this is super super important। इसे मान के चलिए कि आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। एंड इसी का मतलब है इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज नॉट कि पैसे दे दिए एडिटर को या पैसे दे दिए किसी को कुछ और करने के लिए, दैट्स ऑलवेज नॉट इन्वेस्टमेंट। आपका टाइम, आपकी मेहनत, you know your blood sweat effort, worry, all of that is investment, and that's what you have to give to this। So huge shout out। So if you're a budding यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, उनके बहुत सारे कोर्सेज हैं। डिजिटल मार्केटिंग भी है, मैंने वो नहीं लिया था, मैंने यूट्यूब मास्टरी लिया था। बट डिजिटल मार्केटिंग वाले में यूट्यूब भी है, लाइक दैट्स लाइक अ फुल ऑन कोर्स, एंड यूट्यूब में यूट्यूब है। Okay, so basically huge shout out to Mahatma Ji Technical, we make creators, have some really really good teachers। वो सब कुछ सिखाते हैं, एडिटिंग भी सिखाते हैं। बट मैं अपना ही कुछ कर रही थी, बट इट हेल्प्ड मी अ लॉट। एंड टिल डेट ऐसा नहीं है कि मेरे 100,000 हो गए हैं तो आई डोंट फॉलो द चैनल, आई डू। आई थिंक ही ऑल्सो पोस्ट डेली कॉन्टेंट, एंड हफ्ते में 3-4 वीडियोस तो मैं उनकी देख ही लेती हूँ। सुबह का टाइम होता है, सो आई एम यूजुअली लाइक वॉचिंग इट एट नाइट, बिकॉज इंडिया मॉर्निंग टाइम ही अपलोड्स, तो मैं शाम को देखती हूँ। एंड आई वॉच हिज वीडियोज। इनफैक्ट मेरे ना घर में जोक था बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड, ही यूज्ड टू से कि जब मैं घर आता हूँ ना इसी आदमी की आवाज आ रही होती है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम लिसनिंग टू हिम एट द सेम टाइम आई एम डूइंग सम अदर वर्क। सो यू नो his voice was very famous in my house for a brief period of time when I was doing my course, learning and doing whatever। So make that investment। सीखें, आप कोई नई चीज शुरू करते हैं उसे सीखें ठीक से। तो ये चीजें मत करना, ये 1000 hours नहीं, 1000 subscribers, 4000 watch hours, don't do these silly things। कम्युनिटी को बिल्ड करें, फोकस ऑन योर कम्युनिटी, फोकस ऑन योर नीश। इसके बारे में भी वो महात्मा जी टेक्निकल में बहुत बार अच्छे से समझाते हैं, नीश कैसे फोकस करना है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो फिगर दोस थिंग्स आउट एंड देन यू विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। YouTube is not a one-day game। TikTok पे like literally I went viral within the first month of posting something। Like suddenly a video reached 1.2 million views। 1.2 million views मेरे आज तक किसी भी वीडियो पे नहीं हुए हैं on YouTube, right? So it's a very different platform, and which is why you're not able to build a community, but on this platform you're able to build a community। Like अगर मेरी एक कभी वीडियो पोस्ट करनी मैं मिस कर जाती हूँ, या मैं कुछ भी लाइफ का शेयर करती हूँ, I get such love and affection as if you know they're like my relatives, sisters who are asking me or wishing me well, or like अब जब मैं बीमार हुई थी, right, like people are like please take care, and like the messages are so beautiful। That's the power of this platform। A true authentic community is what you can build here। And guys, drama मत करना, ठीक है? I literally have to watch drama channels, global drama channels and Indian drama channels to figure out कि community में क्या हो रहा है। Because मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैंने किसी ब्रांड को mention कर दिया जिसकी कोई controversy चल रही है, तो फिर मुझे पता होना चाहिए, right? And skincare brands and global skincare community में बहुत ड्रामा होता है। I'm like a crab with a hermit, right? I'm just sitting and doing my videos, I'm just sitting and doing my work, not really aware कि क्या हो रहा है, but I have to like follow the community, I have to figure out। Guys, I'm sorry, वीडियो लंबी हो रही है, so if you're not really into this YouTube content creation thing, आप चले जाओ। and अगर आप consider कर रहे हो तो stick around, because I'm sharing with you some real honest advice, tried and tested, tried and true। Number one, and this is not number one, everything I say number one, not number one। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो किसी भी कंटेंट क्रिएटर के साथ हो सकती है किसी भी पॉइंट पे, एंड दैट इज कि आपके चैनल के व्यूज गिर जाएं, आपका ऑडियंस आपसे डिसएंगेज कर जाए। ये 1000 सब्सक्राइबर पे भी हो सकता है, 10 पे भी हो सकता है, 1 लाख पे भी हो सकता है, 1 मिलियन पे भी हो सकता है। बेसिकली यू आर नॉट एबल टू इंगेज योर कम्युनिटी, एंड ये एक बहुत जेन्युइन फियर है, मेरा भी है। बिकॉज सी, आई क्रिएट स्किन केयर, साइंस बैक्ड स्किन केयर कॉन्टेंट डेली,
आप लोग कितना ही सुनेंगे, बोर भी हो जाते हैं ना कभी कभी. मतलब everybody has a life, I have a life, I have so many things outside skincare that I am doing. फैमिली है और बाकी शौक हैं, आपके भी होंगे. तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा हर रोज 5 बजे या 6:30 बजे इंडिया के शाम को बैठ के मेरा एक स्किन केयर रूटीन सुने. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट नेसेसरी, एंड इट्स अ जेन्युइन फियर दैट व्हाट इफ दे गेट डिसएंगेज्ड. एंड ये किसी भी नीश के साथ हो सकता है, कुकिंग वालों के साथ भी हो सकता है, मेकअप के साथ, ट्रैवल के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है. पीपल कैन डिसएंगेज. हाउ डू यू अवॉइड इट? हाउ डू यू कीप योर कम्युनिटी टाइट टुगेदर? द सिंपलेस्ट आंसर इज इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज. मैंने कैसे किया? जब कंटेंट शुरू किया, मोनोलॉग फॉर्म था. करेक्ट, मोनोलॉग फॉर्म था जहां पे मैं बैठ के ज्ञान दे रही थी. इम्प्रोवाइजेशन नंबर 2, आई स्टार्टेड डूइंग द स्किन केयर रूटीन, फिजिकल एप्लीकेशन, सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने लगी. फिर मैंने किए हाइब्रिड रूटीन्स, एक से ज्यादा प्रॉब्लम की अलग अलग रूटीन्स बताए. उसके बाद मैंने उसमें और डाइवर्सिफाई किया, एंड मुझे बहुत हेल्प हुई आपके कमेंट सेक्शन से, राइट? सो ऑल द कमेंट्स दैट यू राइट, आई रीड. आई मे नॉट बी एबल टू रिप्लाई टू एवरीथिंग, बट आई रीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड आई वर्क अराउंड इट, राइट? उससे मुझे बहुत हेल्प हुई. And then I started doing green screen videos. So if you've seen in the month of September, I've done tons and tons of green screen videos where, like, because मैं green screen use करती हूँ तो पीछे ऐसा बहुत तमाशा हो रहा होता है, and I'm doing like high quality kind of videos जहाँ पे it is engaging for the audience. And in the month of November, I'm going to come up with something new, something that none of you guys are expecting, something that no YouTuber has done before, right? No skincare YouTuber, Indian or otherwise, has done before. And that is something I'm going to bring onto my channel. And these are things that you have to think कि कैसे मैं अपने audience को re-energize करूं? How do I make sure that I am worthy of keeping that subscription जो उन्होंने मुझे दिया था, like the subscribe button, the fact that they subscribe to me. How do I stay honest to it? How do I stay worthy to it? And उसके लिए अपना दिमाग constantly चलाते रहो. In the month of November, you're gonna see some really, really different content from me, and I know none of you are expecting it. And कोई product नहीं है, कुछ ऐसी random चीज नहीं है. It is just different content that I am doing, and I have a feeling you guys are going to like it and you're going to appreciate it, and yeah, and we'll grow our community. So that is a very, very important thing that you have to do. You have to invest, you have to improve. Mr. Beast, which is, he's a very famous YouTuber, and अगर आपको पता नहीं है कि Mr. Beast कौन है, then maybe you're too old or you're living under a rock. Don't feel bad. मुझे भी नहीं पता था ये कौन है. I heard his name in like he was being referenced to in all the Mahatma Ji technical videos. फिर मैंने research करी, figured out that he's the biggest YouTuber in the world and XYZ. And उनके मैंने बहुत सारे interviews देखे, and one thing stuck to me. He said this, and I think that is the mantra for success, not just on YouTube, but I think everything in life. Anything you do every day, improve on what you did yesterday. And ये बहुत difficult हो जाता है, हर रोज कैसे improve करें, but every month, every 2 months, try and improvise what you're providing, as long as you are staying ahead of the curve. And उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, research करनी पड़ेगी. There is no easy way out, right? So इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है. There is no कोई ऐसी चीज मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ. There is nothing like that. It is all about staying focused and thinking and innovating. And I cannot wait to show you guys what November 2023 is going to look like, and hopefully what 2024 is going to look like, because we're going to kill it. बहुत सारे गैप्स हैं अभी भी मेरे कंटेंट में, बहुत सारे गैप्स हैं इन जनरल जो मैं फिल नहीं कर सकती, and I'm going to make sure that I do everything in my power to fill those gaps, because I am so grateful to you guys. YouTube came to me on social media. If you heard my story wala life, my life story wala video, if you heard that, it came to me at a not very good time in my life, and you guys have helped me more than I have ever helped you. And now I just want to be the best version of myself for you. Every single day I want to work really hard so that I can support you guys with content जो truly आपके life में value add कर सके. It doesn't matter where you are, doesn't matter who you are. I want to truly keep adding value. I hope these tips were useful. Like I said, कोई टोटके नहीं है. मेरे videos में कभी ना टोटके नहीं होते. Whether it's skincare or it's starting a YouTube channel, there are no टोटकास. I'm like that basic चश्मे वाली, चश्मे थे मुझे like when I was in school, right? I used to wear मेरा LASIK करवाया था when I was 22 years old. I was myopic since birth, and
so lost कि मुझे 10 साल लग गए to figure out कि I actually have weak eyesight, क्योंकि स्कूल में टेस्ट हुआ था and they were like, oh my god, your eyesight is so weak. उससे पहले मुझे लगता था कि सबको ही ऐसे नजर आता होगा, like obviously you think, you know, ignorance is bliss, you think कि you know that's normal. Anyways, चश्मे थे तो that चश्मे लगा के, you know, पढ़ाकू, नर्डी, दो चोटी बनाने वाली, that's basically me. अभी ऐसे मेकअप वेकअप लगा के become glamorous, but अंदर से मैं वही हूँ, right? So I want to just tell you guys that I'm so grateful for all this love and support. I'm so excited to get this thing. Actually ये पहले deliver हो गया था, but usually क्या होता है ना, when I get PR packages, अगर मैं रोज रोज कुछ खोल के देखूंगी ना, मेरे खुद के रूटीन्स, मेरा खुद का प्लान विल ऑल गो हेवायर. सो मैंने अपने हाउस हेल्प को रिक्वेस्ट किया था कि जब भी कोई ऐसा PR पैकेज आता है मेरे लिए, हमारे घर में एक डेजिग्नेटेड जगह है, वहां पे रख दो, फिर उसको मैं अपने PR पैकेज वाले दिन में खोल के देखूंगी, सो दैट आई डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड और ओवरवेल्म्ड. बिकॉज बिलीव यू मी, इतने सारे प्रोडक्ट्स को देख के ना खुद भी ऐसे ना पैल्पिटेशंस होती है कि ओ माय गॉड देयर इज सो मच टू यूज, आई जस्ट हैव वन फेस, व्हाट एम आई गोना डू. इट्स स्ट्रेसफुल. So obviously she very sweetly उन्होंने ये वाला पैकेज भी उसके साथ रख दिया. And today when I looked at it, when I was आज मेरे को देखना भी नहीं था पैकेजेस, but when I looked at that corner, I'm like, ये कैसा PR आया है फ्लैट सा, you know, because this is like a flat black box, right? I'm like, इसके अंदर क्या आया होगा? So I picked it up, and because of all of this DHL whatever, ये YouTube का जो thing है वो completely ना इसके ऊपर छुप गया था. So I saw something BE little bit and I was like, oh my god, this has come through. I'm so excited. I'm so excited. I don't think I'm going to put it up. I don't even know where I'm going to put it up. But you know what I really want? I want कि मेरे पास ये भी हो और मेरे पास वो गोल्डन वाला भी हो, वो जो I think 1 million पे आता है. 1 million पे आता है ना? I don't know. 1 million पे आता है, 10 million पे आता है, I'm not sure. But मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, then I'm going to make a nice like YouTube wall. Anyways, I think उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है नहीं भी लगे. एनी विच वेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रियली लॉन्ग वीडियो. अगर आप आखिर तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इस पॉइंट पे लिखो दैट वॉचिंग टिल द एंड. And I will see you tomorrow with a skincare related video. If you enjoyed it, like, subscribe, and take great care of yourself. As always, guys, I'm so grateful. I am so grateful that all of you exist in my life. And you know, before I end, because इतनी लंबी हो गई वीडियो तो 1 मिनट में और क्या होएगा. So you know, usually जब मैं दूसरे YouTubers को सुनती थी ना, when they used to say these things that I love my audience and I'm so grateful, तो ना मुझे लगता था फेक है. As an audience, because मैं YouTuber नहीं थी, right? मुझे लगता था कि ये तो फेक है, ऐसे कैसे, मतलब why would you be so grateful if some, but now I bite my words back. I truly believe that they were all saying the truth, hopefully, because बाकियों का तो पता नहीं, but I am very very grateful that all of you are there in my life. Okay, bye. लंबी वीडियो हो गई. See you tomorrow.